Are you ready to go? Now, rule number one, ladies and gentlemen, you are going to require a pen and a paper. Pen and a paper. Actually, आपको 2 या 3 पेपर चाहिए होंगे इसमें. पेन और पेपर होना चाहिए. मेरे हाथ में है, आपके हाथ में होना चाहिए. खोल लीजिए. ऑल्सो पुट ऑन योर थिंकिंग कैप्स, क्योंकि दिमाग भी चलाना पड़ेगा हमें, और दैट इज वेयर द एंटायर फन इज गोइंग टू बी. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी टू बिगिन? Should we dive? Are you ready for the dive? I like your enthusiasm. Then let's begin. Let us begin without further ado. So 2025 essay paper, more or less typical, but टॉपिक्स फिलोसॉफिकल थे, टॉपिक्स एब्स्ट्रैक्ट थे, टॉपिक्स आसान नहीं थे. मैंने सबसे मुश्किल टॉपिक चुना है आपके लिए. आई हैव चोजन द हार्डेस्ट टॉपिक दैट आई कुड फाइंड, एंड आई हैव आल्सो चोजन द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक दैट इज पॉसिबल. The one topic that opens your mind. It will take your mind and it will expand it like this. It will expand the horizon of your mind. It will go into essay. It will go into ethics. It will go into GS2. It will go into GS1. It will go into GS3. And it is just the most beautiful topic that you can ever find. In the entire gambit of this UPSC preparation, you will not find an essay topic more beautiful than this. Truth knows no color. It's not an easy topic. Okay, admittedly, इसमें बहुत सारे dimensions हैं, इसके बहुत सारे angles हैं. There is a lot which is going on with this topic. This is the topic I have chosen. I could have chosen an easier topic, and I will show you the easier topics. But I've chosen a relatively harder one, and I have chosen a relatively more abstract one. Nothing is clearly well defined. Let me show you some other topics actually. Take a look at this. This is section B of that paper. ये उसी paper का section B है. Take a look at the first one. Muddy water is best cleared by leaving it alone. Not that hard. मुझे लगता है कि philosophical नहीं है, abstract है थोड़ा सा, because metaphorical है. You know what I mean? The difference between a philosophical and a not so philosophical but abstract and metaphorical allegorical sort of an essay. ठीक है, मतलब मैं बहुत clearly ये समझ पा रहा हूँ कि muddy water से आप क्या कहना चाह रहे हो. I can very quickly deduce. You are saying by muddy water, all right, all sorts of problems, all sorts of corruption, you might say. Immediately your mind links it to corruption. Immediately your mind links it to organization. All of those things. Understood? Yeah. सिंबॉलिक नहीं है क्योंकि लिंग्विस्टिक है. सिंबॉलिक नहीं बोलेंगे, मेटाफोरिकल बोल सकते हैं, एलेगोरिकल थोड़ा सा बोल सकते हैं. बट एनीवे, उसको लेट अस नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स. द पॉइंट इज, ये प्योर फिलोसफी नहीं है. मडी वाटर इज बेट. It will boil down to, there was this topic in the past year, or I think the year previous to that, the best time to repair the roof is when the sun is shining. The best time to repair the roof is when the sun is shining. ये उस टाइप का टॉपिक है. इट गोज टू, हम मडी वाटर को डिड्यूस करेंगे, हम ये डिड्यूस करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विद इट. वी विल ऑब्वियसली काउंटर आर्ग्यू. इमीडिएटली आपके दिमाग में आएगा कि यार इसको मैं अग्री तो नहीं कर सकता. आई कांट अग्री टू दिस. जैसे ही मैं इसको लिटरल वर्ल्ड में लाऊंगा, द एग्जैक्ट मोमेंट आई ब्रिंग दिस इनटू लिटरल and real perceived problems of the world, including muddy waters, if those muddy waters are corruption, then should I leave the muddy water alone? No, because there is a counter argument, And have you heard of that phrase which says, if you leave a worm at the core, it eats away at the entire apple. So not all solutions can be found by leaving the muddy water alone. Some solutions require a very proactive approach. And so this is so obvious. This is, I would say, a relatively easier topic. And I am doing all this so that you are now beginning to slowly distinguish between what is truly philosophical and what is not. ये हम क्यों कर रहे हैं? Why are we doing this? ताकि टॉपिक सिलेक्शन में थोड़ी हेल्प हो जाए. आई एम जस्ट ट्रेनिंग यू लिटिल बिट. मैं अभी वापस आऊंगा इन टॉपिक्स पे, और मैं आपसे इन पे एक एक्सरसाइज भी कराऊंगा. सो फार सो गुड. एक और टॉपिक देखते हैं. द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो. That does not hit me with a surprise. It does not hit me with any sort of abstract notion of philosophy that I have to contend with. It's fairly simple. It's about experience. It is about experience. It is about understanding the point that what is happening to my days is not going to give me perspective. The difference is between information and wisdom. The difference is between experience and wisdom and maturity. And what you get every day are these snippets of experience. You have to take those snippets and do pattern recognition over time, over incidents, over things, over across dimensions, to arrive at a certain pattern of the world, a world map, as you might call it, to create a reality around you. And that takes time. So, of course, this is one dimension that
it would have gone into. Take a look at the fourth one. It is best to see life as a journey, not as a destination. ये टॉपिक रिपीटेड है, ये टॉपिक बार बार आता है. इससे पहले वाले the year before that and the year before that, this essay topic had come in a different avatar, and it had said in that year, life is a long journey of from being human. Life is a long journey between being humane and being human. Between being humane and being human. So that topic had more of an ethical tinge, an ethical dimension. This one is about, you know, how you should treat life. There is a very interesting concept called Eudaimonia. आपने सुना है Eudaimonia? क्या होता है Eudaimonia? Eudaimonia is the search for the good life. Eudaimonia was an obsession of the Greeks. पुराने Greek philosophers जो कि बार बार हमारी कॉन्वर्सेशन में आएंगे inevitably, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल कैनन को ले किया था. वो इस चीज के से इस पीछे होते थे, मुझे ये बताओ कि अच्छी जिंदगी होती क्या है, जिया कैसे जाए, बढ़िया तरीका क्या है. व्हाट इज द सर्च फॉर द गुड लाइफ ऑफ यूडाइमोनिया. कैसे जिया जाए इसको. शुड आई ट्रीट इट एज अ मिशन? शुड आई गो इनटू हिडोनिज्म? मैं सिर्फ प्लेजर सीकिंग करूं? शुड आई गो फॉर द प्लेजर डायरेक्टली बिकॉज आई नो दैट लाइफ विल एंड, सो व्हाई शुड आई नॉट गो जस्ट फॉर द प्लेजर प्रिंसिपल? इट वुड मेक सेंस. बट देन सम पीपल से नो नो नो, you should not do that. That is absolutely not the purpose of life. People like Gandhi, who are deontological, and we will come to deontology, etc., would completely counter argue with that and not agree to a single element of that, because that was his idea. And Mahatma Gandhi, by the way, is very relevant to our conversation today. And he will come in our conversations, he will come repeatedly. So, you've seen some topics. My topic for today is this. Do you see the issue with this topic? And do you see that there is a hierarchy? अगर मैं एक abstraction की hierarchy बनाऊं और मैं कहूं कि if I build a hierarchy of abstraction and if I say that, you know, I will not talk about corruption, I will not talk about problems, I will take all sets of problems, all the problems that there are, the set of entire problems, and I put them on a sort of a metaphor called muddy water. A ship is meant to sail, but a ship is safe in harbor, but it is not meant for that. I say stuff like that. I use a sort of a metaphorical, allegorical, idiomatic sort of a phrase. I have gone one level above abstraction. If I go another level above abstraction, I say completely abstract stuff like this. Then I am philosophical. And this becomes tricky. But that is how we deconstruct. We are going to follow the reverse flow down and we will break this into things. And here comes the first technique that you must learn. The first technique you must learn, ladies and gentlemen, is deconstruction. Deconstruction. Deconstruction बहुत सिंपल चीज है. Deconstruction बोलती है कि आप ऐसे टॉपिक को भूल जाओ. सिंप्लीफाई करते हैं. हमने ये सब ऐसे टॉपिक्स देखे, हमने इन ऐसे टॉपिक्स में कुछ डायमेंशंस देखे. Deconstruction बोलती है कि we should not worry about this. Let us not worry about this. Let us ignore the statement of the essay. Let us forget about it. Let me find what are the two main elements that this essay topic is composed of. And let me not figure out anything else. Okay? This is the number one rule of deconstruction. In deconstruction, we forget the essay topic, we isolate and deconstruct the basic elements, the core elements, the two things that the essay topic is about. If the essay topic is this, truth knows no color, what are the two things that the essay topic is about? What do you think? Truth and color, exactly correct. Doesn't take time to figure that out. Rupa is absolutely correct. ये दो चीजें हैं. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. Understood. मतलब मैं कह रहा हूं आप इग्नोर करो ऐसे टॉपिक को, इसकी थीसिस को, इसके सेंट्रल टेंशन को, इसके एलिमेंट्स को, इसके डायमेंशंस को. यू इग्नोर देम, जस्ट डिकंस्ट्रक्ट इन योर माइंड एंड आई विल टेल यू व्हाई. आई विल टेल यू व्हाई. यू विल do this. You will divide your paper like this into two elements, T1, T2. You will write. Here in T1, you will write truth. Here you will write color. You have deconstructed. बड़ा simple ऐसे. क्योंकि अभी now we're going to end up filling this page. This is what I've done. Now great shakes, no big deal.
Simple enough and fairly easy. So far, so good. You deconstructed. Are you willing to deconstruct these topics? Now, let us see what deconstruction yields if we deconstruct these topics. Muddy water is best cleared by leaving it alone. Tell me, what are the two things, two elements, or two concepts, call it whatever you want, that this essay topic is composed of? Thing one or thing two क्या है इसके अंदर? Now, we have arrived at something very abstract. Truth knows no color. Truth आपने एक जगह लिखा है, color आपने एक जगह लिखा है. We need to now extract content and figure out what is it that we are trying to insert in the essay topic. We are not on the relationship between truth and color. But for that, I have a trick for you. Are you ready for the trick? It is called structure brainstorming, and the trick is called 12QC. मैं आपको अभी I will not ask you to think about it. I am going to ask you a few questions and you will generate keywords. I will ask you a few questions, you generate keywords, and let us see where it takes us. Shall we? We are talking only about truth, the word truth, the English word truth. I am asking you, my first question to you is, where have you heard the word truth being used? That is the only question I am asking. Just answer that as literally as you can. ये जो वर्ड है ना ट्रूथ, ये आपने कौन से कॉन्टेक्स्ट में सुना है, ये कहाँ आता है, ये कहाँ बार बार सुनने को मिलता है, विच एरिया डील्स विद इट? वैल्यू, यस डॉक्टर प्रशांत, राइट दैट डाउन. वैल्यू लिखो आप. जस्टिस, दैट्स अ गुड वन, राइट देयर. जस्टिस, राइट. लॉ एंड जस्टिस, दैट्स वन राइट देयर. क्रिटिकल. और बताओ. सत्यमेव जयते, यस. और बताओ. यस. ठीक है. गो बियॉन्ड दैट. Ved, yes, okay, write that down. Scriptures, spirituality, yes, write that down. Science, excellent, yes. Politics, law and justice, तो we have that. ये तो हो चुका है. और कहाँ आता है ये? In which domain does this come, this word? Spirituality, we have it. Governance, we have it. Economics, yeah, maybe, perhaps. Why not? Sure. Bureaucracy, sociology, yes, it comes in sociology, but not particularly so much in business, I would say. But it'll definitely come in sociology. It comes in philosophy all the time. It comes in physics, definitely. Physics is perhaps the most raw version of the investigation of physical truth. I mean, the physicists will argue that physical truth is truth, but that's a different thing. It's a different conversation. Acha. I will now ask you 12 questions, or I will ask you those 12 questions in the context of truth. And then you will write down keywords. Are you ready? ये बहुत अच्छे keywords हैं आपके. अभी आपने, you should be writing these keywords. मेरा पहला सवाल, where have you heard or read about the core concept of truth before? ये मैंने पूछ लिया. What is the importance of the concept for human beings? What is the importance of truth for human beings? What words come to your head when you think about that? When you think about that question? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? हम क्यों करते हैं? Why do we investigate truth? Why do we investigate in science? Why do we investigate it in law, in justice? Why? Credibility, social cohesion, yes, equity, fairness, balance. Okay, write these down. These are great keywords. अभी in the next few minutes आप यही कीवर्ड यूज करने वाले हो अपने ऐसे में, और ये अच्छे कीवर्ड्स हैं. आप लिखो इसको. Tell me more keywords that you can think of when you think of color. What else could it mean? Because of course it has a metaphorical meaning. In literal color की बात तो हो नहीं रही है. It's not talking about the visual spectrum of light, the blue, the orange, the green. We are talking about all this stuff. और क्या क्या है आ सकता है इसके अंदर? Okay. Okay. Very good. Very good. Communalism. I mean that's sort of division. Now, please look at what is in front of you. Take a moment. एक बारी एक मिनट लो आप. आपके सामने जो कीवर्ड्स हैं, आपने ट्रूथ और जस्टिस, ट्रूथ और कलर को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा था. आपने डीकंस्ट्रक्ट किया था. आपने काफी डिफिकल्ट सा फिलोसॉफिकल टॉपिक उठाया.
और उसके बाद आपने उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करी और आपने उसके कुछ एलिमेंट बाहर निकाले। क्या है आपके सामने? व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू? You see a list of keywords? Do you see them? Yes. Now, if I wanted to understand the absolute core theme of what this topic is, there is a relationship, and this is a actual very interesting trick. After you deconstruct, let me write this down for you. After you deconstruct, always ask, what is the relationship between thing one and thing two? If I ask this question in this essay topic, what do I get? What is the distinction between truth and color? What is the relationship between them? The essay topic is saying that truth knows no color. The essay topic is saying that truth knows no color. But what is the real relationship between truth and color? I just articulated it just a moment ago. But how would you articulate it? Can you articulate it in a statement or two? क्या आप एक या दो स्टेटमेंट में आर्टिकुलेट कर सकते हो? और ये बाय द वे, दिस deconstruction will work for every essay. This element, this little trick will work for almost any essay. आप कहीं भी डाल दो इसको, आपको रियलाइज होगा कि आपके पास धीरे धीरे एक इंट्रोडक्शन और एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है उसकी। अब यू आर नाउ बिगिनिंग टू ग्लीन एट द डायमेंशन ऑफ इट, और जो डायमेंशन है वी विल be able to pull from all of these keywords that you have inserted. Color is the symbolism of truth itself. Everyone is equal, but every eye has to catch. और बताओ, do better. Give me a nicely formed statement which describes the relationship between truth and color. No examples, एक statement. Supplementary to each other, ठीक है, आप बोल सकते हो, but थोड़ा सा और बेटर कैसे डिस्क्राइब करोगे इस रिलेशनशिप को आप? गो इनटू द एब्स्ट्रैक्ट, कोशिश करो आप. दिस इज बेसिकली जस्ट अ लिंग्विस्टिक हर्डल. इस लिंग्विस्टिक हर्डल को थोड़ा सा हमको क्रॉस करने की कोशिश है. वी हैव टू ट्राई टू यूज द वोकेबुलरी दैट वी हैव टू एक्सप्रेस द थॉट, क्योंकि थॉट तो अब आ चुका है. यू हैव नाउ कैप्चर्ड द थॉट इन योर माइंड जिसकी हम बात हो रही है. Truth has no color, it is universal and impartial. Nichita, are you sure? Yes, that is what the essay topic is saying, but the relationship we have seen is not that. Truth diverges from interpretations. Truth is subjective phenomena which can change. Yes, good. Verisimilitude. Well, okay. Election Commission and politics. Truth is absolute and change truth in everywhere. Truth is real, whatever the situation is. Truth can be painted only at a colorful light temporarily, but cannot be distorted, hidden, or delayed. Truth is transparent over multiple manipulated colors. People have their own perspective about the truth. Truth has different sides, can have more than one color. Interpersonal vision. Truth is no need. Okay, truth is colorless because it remains the same regardless of perspective or indigenous circumstance. Uh, Truth doesn't. Yes, Ritika, that's the bullseye over there. Ideally, truth should be. This is the bullseye. Ritika hit it first. I think she was the first one to hit it. Ideally, truth should be of no color, but in reality, it has colors. The very simple language में बोला, but this is the bullseye. This is the central core. This is the central thesis and the central tension जो हमको अपने ऐसे में एक्सपाउंड करनी है. जब हम लिखेंगे इस ऐसे को, तो हम उस ऐसे में क्या हम पूरे ऐसे में यही बोलेंगे कि ट्रुथ का कोई कलर नहीं होता? यही विल बी कीप ऑन गिविंग आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जांपल्स एंड एनेक्डोट्स टू प्रूव, constantly reinforce the idea that has been mentioned in the essay topic, or will we create other dimensions of it? सत्य या सच्चाई का कोई रंग नहीं होता, कोई कलर नहीं होता. Even the Rigved says this. The Rigved says that truth is one if people keep on giving it different interpretations. सच का और सत्य का कोई कलर नहीं होता है, पर हम जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे हम उसको जैसे भी पकड़ने की कोशिश करें, जैसे भी हम उसको लॉ और जस्टिस में कैप्चर करने की कोशिश करें, कलर आ जाता है उसके अंदर. हम उसको फिजिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, कलर आ जाता है उसके अंदर. हम उसको सोसाइटी और सोशल गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, कलर आ ही जाता है उसके अंदर. हम उसको हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करें, जितना इंपार्शियली देख सकते हैं उतना इंपार्शियली देखने की कोशिश करें, कलर आ ही जाता है उसके अंदर. ये है इसका कोर थीम. हम एथिक्स की बात करते हैं, कलर आ ही जाता है उसके अंदर. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बायस, perspective always seeps in, and that is the core issue, is it not? Is it not the core issue with history, the interpretational differences? Is it not the core issue with law, with justice? Why
is it that something like homosexuality was illegal, then it was legalized? Why is it that a law that is legal now was illegal before? Why is it that it keeps on constantly changing? Because ना सोसाइटी ट्रुथ की डेफिनेशन पे एग्री कर पा रही है, ना लॉ एग्री कर पा रहा है. सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन चेंज होती है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन बाद में चेंज होती है. ऐसे ही होता है ना. इट कॉन्स्टेंटली एंड्स अप चेंजिंग, राइट? द कॉन्टेक्स्ट चेंजेस बिकॉज वी डोंट नो व्हाट ट्रूथ इज. हम कलर इंपोज करते हैं इस पे, हम चाहते हैं. और हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस, आप ये चीज नोटिस करो, सारे इंस्टीट्यूशंस एक ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं. वो कलर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं. जस्टिस कलर को हटाने की कोशिश कर रहा है. उसकी आंखों पे तो पट्टी लगी लिटरली. मतलब दैट इज द मोस्ट लिटरल मैनिफेस्टेशन एंड सिंबलिज्म ऑफ trying to be colorless. The humans want to be colorless. They want to be impartial, but they're not able to. But they try. The most exalted institutions that we have built aspire for this only. When we say it is a scientific discipline, when we say this is pseudo-scientific, Freud's interpretation of dreams and all of these psychoanalytical theories, then this, Kundali and all these Vastu Shastra, ये सब तो ऐसे ही है. Physics is real. Physics is more objective. What are we trying to do? What is physics trying to do? What is science trying to do? What is the RTI trying to do? What is the RTI trying to do? What is transparency trying to do? What is Lokayukt, Lokpal trying to do? What is accountability trying to do? What is this Cockroach Janata Party or any party in parliamentary debates trying to do? Trying to be colorless. Of course, they don't do that at the end of the day. They don't end up doing it. But all our institutions, our parliamentary committees, our RTIs, our law, our justice, our ethics, our science, our tools, our artificial intelligence, our chat GPTs, our Claudes, all of them are basically trying to give us a colorless view of reality. But we constantly fail. Do we not? बस दैट इज इट. इसके बाहर इस पूरे एशा के टॉपिक में कुछ नहीं है. ये इसका सेंट्रल कोर थीम है. यहां पर एक गलती हो सकती थी. देयर वॉज अ पोटेंशियल मिस्टेक. दैट इज व्हाई आई हैव स्पेंट सो मच टाइम ऑन इट. पोटेंशियल मिस्टेक ये होती कि आप इस ऐसे को बिल्कुल डायरेक्ट लिटरल सेंस में पढ़ते, ट्रूथ हैज नो कलर, और आप उसको प्रूव करते रहते. इट वॉज पॉसिबल, नो, यू कुड हैव गॉन इन दैट डायरेक्शन. अब आप उस डायरेक्शन में नहीं जाओगे. आपको रियलाइज हो गया कि वो डायरेक्शन ठीक नहीं है. दिस मच यू आर अग्रीइंग विद? यू अग्री सो फार? ये दो पॉसिबल डायरेक्शंस थे और वो गलत होता, वो वन साइडेड होता, इम्पार्शियल नहीं होता वो, एंड इट वुड हैव नॉट फेच्ड अस द टाइप ऑफ मार्क्स दैट वी वांट. नाउ वी हैव अराइव्ड एट द कोर थीसिस. बट apart from the thesis, apart from this core tension, have we also arrived at some dimensions? Take a look again at what you have written in front of you. ये जो आपके सामने नोट्स हैं अब, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप इज वी आर नाउ गोइंग टू डिसाइड दिस. अब हम ये करेंगे, व्हाट वी नीड टू डिस्कस नाउ, करना क्या है. 1000 वर्ड्स हैं, लिखना क्या है. व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? अभी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे. वी आर सून गोइंग टू राइट द इंट्रोडक्शन फॉर दिस एसे. अब आपके पास कुछ डायमेंशंस आ गए इसके. बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वही इसके डायमेंशंस बन गए. सोसाइटी एक डायमेंशन है, हिस्ट्री एक डायमेंशन है, लॉ और जस्टिस एक डायमेंशन है, पर्सनल एथिक्स एक डायमेंशन है, साइंस एक डायमेंशन है, स्पिरिचुअलिटी एक डायमेंशन है. बस यही इसके डायमेंशंस हैं. इन्हीं डायमेंशन को यूज करके हमें कंटेंट बनाना है. पहले मैं उनको ये बताऊंगा एग्जामिनर को कि ट्रुथ क्या होता है. ट्रुथ कलरलेस होने की कोशिश करता है. फिर मैं उनको बताऊंगा कि ट्रुथ कलरलेस होने में फेल कैसे होता है, जैसे ही ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, किन किन एंगल से फेल होता है. फिर मैं उनको बताऊंगा कि मैं या तो उनको ये बताऊंगा कि इंडिया, हाउ डज द इंडियन सिविलाइजेशन व्यू दिस, हाउ दे हैव व्यूड इट इन द पास्ट, एंड देन आई विल से व्हाट वी शुड डू. आई विल एंड विद अ नॉर्मेटिव एथिकल पर्सनल एथिक्स टाइप ऑफ अ कंक्लूजन. ये मेरी नैरेटिव है. फर्स्ट आई विल से एंड आई विल सपोर्ट द स्टेटमेंट, द असर्शन इन द एसे टॉपिक. ऐसे की असर्शन कहती है कि ट्रुथ नोज नो कलर. मैं बोलूंगा ठीक है, ट्रुथ नोज नो कलर. स्पिरिचुअलिटी ऐसा होता है और बार बार हमने देखा है कि दिस इज द वे इट शुड बी. वी कंटिन्यू टू इम्पोज बायसेस, बट यस, एक्चुअली इन इट्स एसेंस ट्रुथ नोज नो कलर. हियर आई कैन यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंटेंट्स. कंटेंट का कोई अंत नहीं है इस चीज में. बट आप एब्स्ट्रैक्ट और बेसिक बात भी लिखोगे तब भी चलेगा, विद अ फ्यू एग्जांपल्स. ऑफ कोर्स वी विल ऐड एग्जांपल्स. बट मेरा नैरेटिव क्या है, पहले मुझे बोलना पड़ेगा. फर्स्ट आई विल से यस, this is the truth and truth should be this, should be that, and it is objective. It doesn't matter what
color we impose on it, blah, blah, blah. Then we say, but we are not able to do that. And why we are not able to do that? In which ways does it actually fail from being colorless? We give around 25-30% of our essay and the space of that essay to that. We then we will come to this Indian part of it if we do it, and then we will come to a conclusion. And when I said this is a trick. This will help you form around 80% of your essay topics का narrative इससे बन जाएगा. ये है, it's very simple, overly simple actually. Bad things, good things, Indian things, and should things. Most essay topics, most, I would not say all, but ज्यादातर essay topics का एक basic structure ये बना देता है, ये narrative flow है. Bad things mostly, bad things or good things interchangeable hai. You can start with the good things and the bad things. What is good and the bad is basically do you agree with the essay topic or do you disagree with it? Do you highlight the positive aspects of it or do you highlight the negative aspects of it? Do you do the positive side first or do you do the negative side first? That's all this means. It's interchangeable. कुछ ऐसे टॉपिक्स में पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में चलता है. अगर वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है वो ऐसे, तो आपको कभी कभार नेगेटिव पहले डालना सही रहता है, बिकॉज इट ब्रिंग्स द फोकस on your central thesis, and immediately the examiner knows they are not agreeing with this essay topic, and this is good. They are going to bring out a counter argument to it, and then you go on to the other side of it. That's what we're going to do here also. Do you understand? Should things is the way forward. Yes, very basic. ये बहुत basic है. इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ज्यादातर जगह पे ये narratives काम कर जाता है. It's a very useful template for beginners. When you, of course, become more advanced, you will learn better ways of doing it and you will get better at it, but for now this should be enough. इतना हमारा काम हो जाएगा. तो इस ऐसे के नैरेटिव में मैं क्या करूंगा? इस ऐसे के नैरेटिव में मैं पहले बताऊंगा why the truth is the way it is, then I will say that it is not colorless unfortunately and why it tends to be, and I'll also bring out the problems it creates, this colorless, this colorfulness, this inability of ours to look at things without color. I will talk about the echo chambers. I will talk about this postmodern blindness, this algorithmic, virality, जो कि जिसको ट्रुथ से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ व्यूअरशिप से मतलब है, उसको सिर्फ रीच से मतलब है. I will talk about all these things, and then I will come home to a conclusion. But that is just my narrative, which I want to have on paper. I don't want to do anything more with it, but I just want to know मुझे move कैसे करना है. Inside these blocks of narrative, inside these blocks will come my points, the same points that you had written in your paper, in your rough sheet. The same points I will plug 1 point, 2 point, 3 point with example, with anecdotes, with counter argument, example, counter argument, example, counter argument. But of course, मेरा angle will be determined. मैं point क्या बना रहा हूँ? What is the point I'm making? Now, let us take a leap. This is not a step, it's a sort of a leap. It's a sort of a leap. Let us take a little bit of a leap and let us try to attempt an introduction for this. We have spoken about this at length, right? We know what this is. Can we write an introduction about it? First, you try, then I try. I will give you another trick for this, about how to write the introduction. Here is the trick. The trick is called 4Q2. It asks 4 questions. It says, what is thing 1? It asks, what is thing 2? What is the relationship between them? Why is that? Why is the relationship is important? Why is the relationship important? That is all it asks. And if you do this, and if you just club them together, you will arrive at an introduction. I mean, the introduction would not be stellar. It would not be the best introduction ever, but it will be a good, solid introduction for a person who has not written a lot of essays. And this is again one of those templates जो बचा लेगा आपको. So let us attempt it. अभी हमने इतनी discuss करी. We have discussed at length about all of these things. So how would you define truth in a simple statement? Truth is that quality of nature which stands on its own without human interpretation and bias. Simple. It's not very complicated. लिख ही लेते हैं.
Truth is that quality. Is that quality of reality or nature that stands on its own without human bias or interpretation. This is my first line. So far, so good. It is not very fancy. It is pretty much in lines with what we have discussed so far. It is not the greatest line ever. It is not bad. चलेगी. What is color? अभी हमने कलर को इतना डिकोड किया है. ये ट्रूथ है. What is color? कलर को कैसे डिफाइन करूंगा? यहाँ पर हम मुझे पता है what is meant by color. So what I have written is color is what we impose on reality. Beauty is in the eyes of the beholder, and as such, our perception of reality is subjective and colored. Colored को मैंने quotation marks में लिखा है. तो अभी तक मैंने 2 sentences लिखे हैं. There are 2 sentences basically. पहला sentence बोलता है truth is that quality of reality or nature that stands on its own without human bias or interpretation. दूसरा statement बोलता है color is what we impose on reality. Beauty is in the eyes of the beholder, and as such, our perception of reality is subjective and always colored. ये मेरी अभी तक की 2 लाइनें हैं. मेरी स्टेटमेंट अभी मेरी इंट्रोडक्शन आधी हुई है, बट मैंने ये 2 स्टेटमेंट लिखी हैं. ये 2 स्टेटमेंट्स में एक कॉमन एलिमेंट नोटिस करने वाली है. मैंने बोला ट्रूथ इज दैट क्वालिटी ऑफ रियलिटी. मैंने बोला ट्रूथ इज दैट क्वालिटी ऑफ रियलिटी. फिर मैंने बोला कलर इज व्हाट वी इंपोज ऑन रियलिटी. आपको एक सिमेट्री दिखेगी वहां पे. अगर आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन को तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा इसने दोनों स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्रास्ट भी किया है. यू नो, सो दैट इज जस्ट अ लिटिल लिंग्विस्टिक ट्रिक. ऐसी लिंग्विस्टिक ट्रिक्स बहुत काम आती हैं. और जब आप लिखोगे, जब लाइव ऐसे हम लाइव ऐसे राइटिंग करेंगे तो इस टाइप की बहुत सारी लिंग्विस्टिक ट्रिक्स निकलेंगी, निकलती हैं, एक्सटेम्पोर निकलती हैं. ये भी प्रिपेयर्ड नहीं है, बट ऐसे धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है. उसको एग्जामिनर विल एक्चुअली गेट कि ये अब डिस्टिंग्विश करेगा. ही विल नाउ डिस्टिंग्विश एंड ही विल नाउ अराइव एट दैट सेंट्रल थीसिस, व्हिच इज एक्चुअली व्हाट आई विल डू. यू नो, so that repetition. अच्छा, you want me to repeat? पहली स्टेटमेंट है ट्रूथ इज दैट क्वालिटी ऑफ रियलिटी और नेचर दैट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन बायस और इंटरप्रिटेशन. दूसरी है या दूसरी है कलर इज व्हाट वी इंपोज ऑन रियलिटी. ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, एंड एज सच आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज सब्जेक्टिव एंड ऑलवेज सिंगल कोट्स में कलर्ड. ये हमने बोला है. और ये जो सिंगल कोट्स में मैंने कलर्ड बोला है, इससे भी बहुत कुछ बता रहा हूँ मैं वैसे एग्जामिनर को. I am telling the examiner a lot by that simple use of those single quotes. So far so good. आगे चले तीसरे स्टेटमेंट पे. तीसरी स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे? हाउ वुड यू अटेम्प्ट करो आप? अभी इतना आई हैव गिवन यू. दिस इज व्हाट आई वुड डू. आप बताओ आप क्या करोगे थर्ड स्टेटमेंट के? हाउ वुड यू राइट इट? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दैम? ऐसे की स्टेटमेंट बोलती है दैट ट्रूथ हैज नो कलर. आप बताओ व्हाट इज. अब ये दिस इज अ ट्रिकी स्टेटमेंट. इट्स नॉट एन इजी स्टेटमेंट टू राइट, बट आप लिखोगे कैसे इसको? क्योंकि आप पूरी तरीके से समझ चुके हो कोर थीसिस. अब सिर्फ इंग्लिश हो रही है. नाउ इट्स ऑल लैंग्वेज. नाउ इट्स ऑल एक्सप्रेशन. नाउ इट इज ऑल क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग एंड क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज. अब और कुछ नहीं बचा है. टॉपिक हम समझ चुके हैं. आई हैव रिटन and therein lies the core tension in science, society, history, governance, and philosophy. Human differences forbid a universally acceptable definition of what is true. ये लिखा है exactly इन शब्दों में. And therein lies the core tension in science, society, history, governance, and philosophy. Human differences forbid a universally acceptable definition of what is true. बस इतना लिखा है. And therein lies the core tension. That is it. This is what I've written, and this is my actual handwriting. And this has not been written to be deliberately beautiful. This is exactly how I write. I will read it out for you. I'll read it out for you. I'll read it out for you. I'll repeat it thrice, not just twice. I have written, and therein lies the core tension in science, in society, history, governance, and philosophy. Human differences forbid a universally acceptable definition of what is true. And therein lies the core tension in science, society, history, governance, and philosophy. Human differences forbid a universally acceptable definition of what is true. Now, let me read the whole thing again. ये
दिस इज परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द एंटायर एसे, बिकॉज ये इंटायरली एब्स्ट्रैक्ट है. इसके बाद जो कंटेंट आएगा बॉडी में, वो कॉन्क्रीट होगा, उसमें एग्जांपल्स होंगे, उसमें हम आर्टिकल 14 की बात कर सकते हैं, उसमें हम पशुपति सील की बात कर सकते हैं, हम अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं. पर इंट्रोडक्शन में बहुत डिफिकल्ट एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है, तो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस ऐसे का, आई वुड से लिंग्विस्टिकली द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. Do you want me to read out the entire conclusion, the entire introduction? Let me read out the entire thing for you, and then see how it flows. Exactly what I've done, without any trickery, is मैंने इन तीनों का एक आंसर लिखा है अपने बेस्ट लैंग्वेज में. मैंने कोशिश करा है कि वो ज्यादा कनेक्ट हो या ना हो, बट मैंने उनको बस साथ में जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, जस्ट स्टिच देम टुगेदर. दिस इज द इंट्रोडक्शन. Truth is that quality of reality or nature that stands on its own without human bias or interpretation. Color is what we impose on reality. Beauty is in the eyes of the beholder, and as such, our perception of reality is subjective and colored. Colored is in quotes. Truth and color are like yin and yang. The observer and the object observed are inseparable in reality, and no matter how much we try, pure colorlessness, in quotes, is impossible to achieve. And therein lies the core tension in science, society, history, governance, and philosophy. Human differences forbid a universally acceptable definition of what is true. That's my introduction. I do not think a bad one. There are 100 ways to write this introduction. What I did, मैंने एक बड़ा सिंपल सा प्री सेट टेम्पलेट फॉलो करा है इन 4 सवालों का, और मैंने उनके आंसर लिखे और मैंने सारे चिपका दिए और मैंने कुछ नहीं किया. तो सर्वाइवेबल इंट्रोडक्शन लिख दी है मैंने. मैं द एग्जामिनर विल नॉट शर्क अवे एट दिस, यू नो. मैं एक बारी फिर से पढ़ता हूँ, लेट मी रीड दिस होल थिंग अगेन. मैं एक बारी फिर से पूरी पढ़ रहा हूँ. नहीं आएगा यार, ये आएगा आपको ऐसे. ये मैं बता रहा हूँ, आप इससे अच्छी लिखोगे. यू विल राइट दिस बेटर देन दिस, आई एम टेलिंग यू दिस. ये एक मसल है, इस मसल को ट्रेन करना होता है बस. ये कुछ नहीं है. द मोस्ट मच ऑफ दिस यूपीएससी एग्जाम, पर्टिकुलरली मेंस, इज जस्ट लिंग्विस्टिक रैंगलिंग. इधर उधर करने वाली बातें हैं, ये हो जाएगा. कुछ कोई बड़ी बात नहीं है. अभी 1 साल में इससे अच्छा लिखोगे आप, इससे बेटर लिखोगे आप. सो आई विल जस्ट रीड आउट द होल थिंग one more time. I'll read it out. Truth is that quality of reality or nature that stands on its own without human bias or interpretation. Color is that what we impose on reality. Beauty is in the eyes of the beholder, and as such, our perception of reality is subjective and always colored. Truth and color are like yin and yang. The observer and the object observed are inseparable in reality, and no matter how much we try, pure colorlessness is impossible to achieve. And therein lies the core tension in science, society, history, governance, and philosophy. Human differences forbid a universally acceptable definition of what is true. खत्म. अब मैं आऊंगा बॉडी पे. ये मेरी इंट्रोडक्शन है, ये चलेगी. ये खराब इंट्रोडक्शन नहीं है, काम हो जाएगा मेरा. डू यू अग्री सो फार? मुझे मेहनत करनी पड़ी यहां पे थोड़ी सी. पहले मैंने डिकंस्ट्रक्शन करी. लेट मी टेक यू बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम. हम यहां से स्टार्ट हुए. वी स्टार्टेड टू डू सम डिकंस्ट्रक्शन. वी स्टार्टेड टू डिकंस्ट्रक्ट ऑल दीज टॉपिक्स. एक एक करके हमने डिकंस्ट्रक्ट करे. हमने आइसोलेशन करी. बेसिकली वी आइसोलेटेड द कॉन्सेप्ट्स एंड द थिंग्स. फिर हमने जो स्ट्रक्चर ब्रेनस्टॉर्मिंग करी. हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा ये, क्योंकि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं. ट्रूथ क्या होता है, कलर क्या होता है, बट हम इस पे पहुंचे. हमको रियलाइज हुआ कि इसकी कुछ डायमेंशन हैं. कुछ हद तक हमको इस 12 क्वेश्चन क्लूज ने हेल्प करी. हमने 12 इसे क्वेश्चन पूछे. क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो बहुत सारा कंटेंट जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. एक ट्रिक यूज करी, उसने कुछ हेल्प करा, कुछ अपने अपना खुद का दिमाग लगाया. हमने सोचा कि यार इसके तो सिंपल से डायमेंशन बन रहे हैं. ट्रूथ और जस्टिस का एक डायमेंशन बन रहा है जो ऑब्वियस है. साइंस एंड ट्रूथ का एक डायमेंशन बन रहा है. हिस्ट्री एंड ट्रूथ का एक डायमेंशन बन रहा है. वी फिगर्ड दिस आउट बेसिकली, एंड वी फिगर्ड दैट अच्छा चलो ठीक है, इसकी सेंट्रल कोर थीसिस, इस पूरे के पूरे ऐसे की सेंट्रल कोर थीसिस, वंस वी डिकंस्ट्रक्टेड बोथ ट्रूथ एंड कलर, वी अराइव्ड एट द सेंट्रल कोर थीसिस. वो ये है जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में लिखी है. फिर हम आए डिकंस्ट्रक्शन करने के लिए. नहीं, पहले हमने ये करा. वी डिड दिस नैरेटिव फर्स्ट. पहले हम ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम वे फॉरवर्ड बताएंगे. हमने एक नैरेटिव का टेम्पलेट यूज करा. फिर हमने इंट्रोडक्शन लिखी. इंट्रोडक्शन लिखने के लिए वी फॉलोड दिस simple method. We used it, and we used our understanding of what it was to arrive at this. So far, this is where we are in this session.
So far so good. इट इज नॉट इजी, आई नो. डेलिबरेटली मुश्किल टॉपिक चुना है, बहुत आसान टॉपिक चुन सकता था मैं, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं. बिकॉज यूपीएससी कुछ आसान, इतना कुछ आसान देगा नहीं आपको. इट विल गिव यू, इट इज बेस्ट बेस्ट टू ट्रेन योर सेल्फ एज डिफिकल्ट लेवल पे ट्रेन करोगे आप खुद को ना, तो यू विल अराइव एट अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एट द एंड ऑफ द डे, जो कि मेरा इंटेंट है. दिस सेशन आई हैव चोजन द हार्डेस्ट पॉसिबल टॉपिक, तो इसलिए यू विल फाइंड इट नॉट इजी, बट दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट. Now, ladies and gentlemen, tell me, how will you write the body of the essay? How will you write the body of this essay? And I will now give you some homework. I will now give you some homework. Your homework is this. Introduction मैंने आपको बता दी. Central theme मैंने आपको बता दी. आपको इसके dimensions already पता चल चुके हैं to some extent. आप महात्मा गांधी को यूज कर सकते हो इसके अंदर. आप रिलेटिविटी और सोसाइटी और हिस्ट्री को यूज कर सकते हो इसके अंदर. क्या आप इसकी बॉडी लिखोगे? विल यू राइट, लिटरली सिट डाउन एंड राइट 1,000 word essay on this? You already know what there is to it. Will you write it? And if you do write it, will you get yourself an evaluation? I got this for you. आपके लिए एक prompt है. I have this prompt for you. मैं चाहता हूं कि आप essay जब लिखो, I want you to push that essay into this prompt. Please take this prompt. पूरा का पूरा prompt आप copy paste कर लो. इसमें पूरा आ नहीं रहा है. So I will have it sent to you. I will have it sent to you. I want you to evaluate this prompt and send me your feedback. I have also designed a different prompt for you that will work for. So this prompt particularly is for this essay topic. Truth has no color. Truth knows no color. Then there is another prompt which is relevant for all topics. That is relevant for all topics, which also I will share. And this is what we do. So if, for example, अब एक बारी वापस आते हैं and let us see this, just to see कि हम कहां तक पहुंचे हैं. अगर हम पहला वाला ऐसे टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे होते, muddy water is best cleared by leaving it alone. Suppose we were doing that. Suppose prompt, I will have to send it to you because this prompt is very lengthy and I'm not able to actually pin it. So this is part of the prompt, but the prompt is not fully getting, copy pasted here because it's limiting my character length. This is supposed to be the prompt. The prompt बहुत लंबा है. मैं आपको prompt भेज दूंगा. I will share the prompt with you. So if we were doing this essay topic, muddy water is best cleared by leaving it alone. Would you be able to attempt it using the ideas and the tricks and the narrative flow that I have suggested? Would you be able to deconstruct it into muddy water and into leaving it alone as a strategy to solve problems? Would you be able to brainstorm and ask these 12 questions about muddy water? Where have you heard about muddy water? What could muddy water mean? What could it mean? What would you be able to leverage as points here? Would you be able to use these? Is there an ethical question or debate associated with it? Do you already know what is muddy water? What is the opposite of the word? What happened in the past, which is a good example of it? Can you think of an Indian example associated with it? I think fairly easy. You should be able to arrive at some level of understanding of this. Then, would you be able to arrive at the central thesis? What is the central thesis? ये muddy water वाले question में central thesis क्या है? Central tension क्या है? ऐसे बोलता है, topic बोलता है, muddy water is the best way to solve the problem of muddy water is to leave it alone. इसका central thesis क्या है? Who will tell me? I will share this 12QC also. I will share this with you. ये सब वैसे बुक में लिखा है. All of this is in my book, but I will share it with you separately. No problem. Yes, Dr. Prashant, pretty much true. That is the central theme of it. But let the others also try. Central thesis क्या है? Yes, Ritika, यही है central thesis.
And Devrupa, this is a completely separate thing. I mean, yeah, you can't use another metaphor to describe another metaphor. You'll have to be a little bit more literate and deconstruct it. It will have to be sent through email, and I will copy paste it on my Telegram. Patience and non-intervention, yes. I mean, yeah, patient non-intervention. To what extent and in which instances is patient non-intervention the best strategy? That is the core tension. Muddy water is best treated by leaving it alone. Is it good? Not good? Useful? Not useful? सारा विवाद ही वो है इस क्वेश्चन में. हम इस स्टेटमेंट से अग्री करेंगे या नहीं करेंगे? विल वी अग्री विद द स्टेटमेंट मडी वाटर इज बेस्ट ट्रीटेड बाय लिविंग इट अलोन? नहीं, मतलब पूरी तरह से तो अग्री नहीं करेंगे, काउंटर आर्ग्यू भी करेंगे. अच्छा, काउंटर आर्ग्यू करेंगे, सेंट्रल थीम बता दिया. ये कैसे करोगे आप? इसका नैरेटिव कैसे बनाओगे आप? हाउ विल यू बिल्ड द नैरेटिव ऑफ इट? आप क्या करोगे उसके अंदर? आपने इंट्रोडक्शन लिख दी, मैं कहता हूँ एक बारी लेट अस अज्यूम दैट यू हैव रिटन द इंट्रोडक्शन. आपने वो वाला फॉर्मूला यूज करा और आपने एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन लिख दी. फिर क्या करोगे आप? ये नैरेटिव कैसे फॉलो होगा? आप बोलोगे क्या? व्हाट विल यू से? आप आपने सेंट्रल थीम यही डिसाइड करा है कि नॉन इंटरवेंशन इज नॉट द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑलवेज. माइट बी सम इन सम प्लेसेस. तो पहले आप बोलोगे वेयर नॉन इंटरवेंशन इज अ गुड स्ट्रेटेजी, कुछ एग्जांपल दोगे आप, सपोर्ट करोगे उसको. फिर आप बताओगे कुछ ऐसे केसेस जब नॉन इंटरवेंशन इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी वेयर यू शुड बी प्रीएम्प्टिव. You might even be able to, you might even, talk about what? Terrorism. You can talk about left wing extremism. You can talk about corruption. You can talk about so many things. दुनिया भर की चीजें हैं, but broadly speaking, narrative के point of view से पहले आप argue for करोगे, आप agree करोगे statement के साथ कि हाँ, it is in many cases one of the best ways, and you will give examples and you will basically scaffold that assumption and that assertion, and you will make it, and you will give it strength by your arguments. फिर आप बोलोगे कि नहीं, there are so many instances where this is counterproductive, and then you will give examples of those instances, and then you will say what we do in India, and then you will say what we do in India, what we do in India in foreign policy, what are Indian what are Indian wisdom, this sage wisdom, पुराना wisdom बोलता क्या है हमारा इस बारे में. You might want to bring in the Gita, or you might want to bring in some scripture. If you want to, you can do that. But आप इंडिया का इस चीज को लेके अप्रोच थोड़ा सा बता सकते हो. फिर आप बोलोगे कि होना क्या चाहिए, what should be done. यही करोगे ना आप. This is the narrative. You are with me on that? That's the narrative, right? You have built the narrative. अब आपको ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं पॉइंट्स. बैठोगे या रफ वर्क करोगे कि जो हमने इतनी एक्सटेंसिवली करा है, तो उसके बाद लिखना स्टार्ट करोगे तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा. इट्स नॉट एज इफ योर पेन विल स्टॉप एंड यू वोंट बी एबल टू मूव अहेड एट ऑल. यू विल बी एबल टू राइट. ठीक ठाक लिखा जाएगा, एंड दैट इज द होल थिंग. मैं प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा है उसके अंदर बिकॉज उसका कैरेक्टर लिमिट छोटा है. प्रॉम्प्ट बहुत लंबा है. आई विल गिव यू द प्रॉम्प्ट, मैं आपको भेजूंगा. And that, ladies and gentlemen, is what I wanted to do. So this, I have, I think, brought you to a certain level of understanding how we deconstruct these things, I think, to some extent. And this is section A. These are essay topics that we did not cover. We picked the hardest one, truth knows no color. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. आपको दिख रहा है क्या? आर यू नाउ एबल टू सी द डिकंस्ट्रक्शन एंड द नैरेटिव एंड द वे इट विल बी रिटन? एटलीस्ट एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिख रहा है आपको अपने माइंड में? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड करना क्या है इसके साथ? पहले आइसोलेट करना है, फिर उसके बाद देखना है, इसका सेंट्रल थीसिस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद एक नैरेटिव स्ट्रक्चर में इसको फिट करना है, देखना है फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके अंदर पॉइंट्स जाएंगे. You are able to see this. If you are able to visualize this now, then the job of this workshop, this session is done. अगर आपको ये हो गया है. Essay writing is normally much of an art. It's not only a skill. It is pretty much an art because one learns it, acquires it. But to a large extent, I have been able to reduce it to many of these techniques, and those techniques also help sort of, I think, expand the mind. There is
an element of expanding the mind that it does, because it forces you to not only think about these abstract ideas, forces you to argue about these abstract ideas. And when you argue, there are counter arguments. When you argue, there are counter arguments. I will give you the Telegram ID also. So if this has been done, then the job has been done. And that is what I wanted to say. You will be writing, I will be sharing with you the prompts for these. What I can do is this. Let me see if this works, although I'm not sure. नहीं हुआ. आपको मुझे ये भेजना पड़ेगा ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सको. आई विल शेयर इट विद यू. I will send you either an email or I will copy paste it on my Telegram channel and you will be able to find it. I'll create a whole document. हाँ, Yash has shared the link. वो पूरा एक document share कर दूंगा मैं उसके साथ. You will have all these things. And that is what I wanted to do, ladies and gentlemen. Do you think some progress has been made? Some progress. लिया हमने difficult topic, जिस हद तक कर सकते थे उसको करा, और कुछ हद तक I hope आपको समझ में आया होगा. And this finally this brings me to what is going to happen the next month. I will be teaching essay writing and I will be teaching some parts of ethics, and I will be teaching some parts of ethics in Nirnaya in the essay ethics module. What I am going to do is this. Today what you have seen is a cluster of 4 classes. यहाँ तक पहुंचने में मुझे 3 या 4 क्लासेस लगती हैं, और हर क्लास में हम 2-3 अलग अलग ऐसे टॉपिक्स यूज करते हैं previous year questions. We always use the UPSC topics. We don't just use our topics. And then many times, so in those classes, there is a lot of brainstorming. We cover all the dimensions possible. There are only 6 dimensions, जिसमें से essays आते हैं, of which we have not covered the psychological dimension yet. But psychological dimension में से ऐसे आते ही आते हैं. The happiness dimension से ऐसे आते ही आते हैं. We cover them, and a lot of content is shared and a lot of brainstorming is done. A live essay writing experience is there in almost every class. In that module, I will devote one entire class to beauty, beautification, to quotations, to anecdotes, to how you make it more powerful, to how you make it more impactful, to how you make your essay distinguished from the essay of almost everybody. Because the issue is, जैसे ही ऐसे के टॉपिक सामने आते हैं ना, people tend to choose the same topic. बहुत ज्यादातर लोग सेम ही पे लिख के आते हैं. सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में एक या दो हॉट फेवरेट होते हैं सबके. The way we are going to do it in that module is we will be writing alongside. हम साथ में लिख रहे होंगे और हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे होंगे. और दिस एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी, ये जो आपको आज थोड़ा सा फील हुआ ना कि एक एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी शायद चाहिए थोड़ी सी इसमें, दिस आई विल इम्पार्ट. Then there are some of these, there is a collection of these very, very beautiful essays that have been written in history. That also I will share with you in that program in Nirnaya, yes, in the essay ethics module. I have not yet spoken. It will help you in improving vocabulary, but yes, vocabulary improve करने का कोई shortcut है नहीं. To be very honest, it's going to take a while, but we will get there. We will get there. That I will expose you to some of the best literature that there is. But there is going to this thing is going to take time and it is going to take effort. आपको लिखना पड़ेगा. You will have to consume some information. You have to write some information. To a large extent, you will be writing in the class, and this is what we're going to do.